Question number 1 is the class teacher of the class. Now I am copying the question and we will run. So this is your question. Now you will give the answer of this question and we will run and see whether it is being executed or not. So first is you will create a list. Now here what is written? The class teacher of the class wants to store the name of all the students in her class in the list stud underscore list. So name of the list is stud underscore list. So we have to create the list, or you will ask the user to enter the list. So for creating the list, what you will write here? Tell me the answer first. Switch on your mic. Names of all the students. So names are string, so it will be in quotes. Now 2-3 names we will write. So it is created. Only directly you can put the names. This is one method. Second method is you can ask the user to enter the name and you can append in a empty list. Second method. Third is using a for loop. You can take one by one how many names are how many students are there in the class, and then you can do it. And fourth method is using eval. You can ask the user to enter. So you will use or, and you will write all the 4 methods in your copy. Whenever this question will be asked, you write all the 4 methods. So here the names I have entered. So this is one method to create a list. And how to display the list? You will use print command. The name of the list was given in the question paper. So this method you have used to display. Now it is showing the list. Now what was the second method? Using eval, you can ask the user to enter. Third is you can use a for loop, how many names you want, and you can ask from the user, and for loop will be there. Then one by one, name of the first student, name of the second student. So those methods were there. Now we will start with these questions. So first one is over. Now the second one, do one thing. This I am just pasting it above. Create a list. Yes, now sort the list of students using bubble sort. Tell me the answer. What happened? Forgotten all. How it will do if you forget all these things? Yes, bubble sort means we will use to for loop for y in range, and here we can write minus x minus 1, or directly till the last also. If we do minus 1, we can write here. Then yes, so in bubble sort what we used to do, we used to swap the values. Now the list is stud list, so we will simply check here. Suppose it is in ascending order. Suppose in the question it is given sort in ascending order. Now we will arrange in ascending order. For that what we have to check, that if the list name is stud list and in this y is greater than stud list of
next value will be y plus 1. Then you have to swap. So ascending means the upper one should be, the previous one should be less than the next element if it is to be arranged in ascending. So if it is not less than, if it is greater than, then we will swap the values. So for swapping the values, what we do, we just, these two values we will take. So value 1 and value 2 will be swapped with value 2 comma value 1. So value 2 is this comma value 1. Value 1 is this one. So this we are swapping the values, and then after coming out we will print the values. So here after our work is over, we will print the sorted. Now here what we have done, we have taken the names. Clear? So we will check once that names can be directly sorted like this or not. Otherwise we will use a second method. So alright, we will just check it whether it is functioning or not. Now when we run our program, now I, R, A, because if the first letter is same, then the second letter it will check. So R, A will come and then real. So it is arranged in ascending order. Now before printing, you put a comment here that the list in student's name in ascending, in increasing order or in ascending order is this. So students names in ascending order is. So this is your, understood? Now the next question, add a new student to the list. Switch on your mic. Fast, give me the answer. In other classes, how nicely the मैम students, yes, tell. मैम वो स्टूड लिस्ट मतलब हाँ ठीक है, हाँ फिर वेरी गुड, हाँ डॉट अपेंड वेरी गुड, फिर स्टूडेंट का नाम. हाँ स्टूडेंट का नाम. अगर यूजर से लेना है तो स्टूडेंट का नाम तुम यूजर से भी ले सकते हो, ठीक है. और हाँ अगर फिर वो यूजर स्ट्रिंग से को नहीं लेना है directly also, so here we will write, suppose your name only I am writing, yes, clear. So when you will run, you can print here. After adding a new name, we can print and we can see the student list. So when we will run our program, you will see that one new name has been added. What mistake? Stud list. I have written the spelling wrong. Yes. Now you can see one name has been added. Clear? Now next, remove a student from the list. Now two methods are there, by taking the index position, by taking the names. So here directly, if you want, you can use name or you can use the index position. Tell me the answer. मैम स्टूड लिस्ट डॉट रिमूव कोई नाम. Then मैम किसी स्टूडेंट का नाम जो रिमूव करना. जो रिमूव करना है उसका नाम, ठीक है. फिर इसको भी प्रिंट कर लेते हैं. एग्जाम में जो आएगा खाली ये क्वेश्चन रहेगा एंड यू हैव टू राइट ओनली वन लाइन आंसर, ओनली दिस मच. Yes, so add a new element using append, you will write it. Remove a student name will be given to you and the list name will be given to you. You have to write this. So all these will be of 1 marks, and for creating and all these things using a specific method, these will be of 2 marks. Then 5 marks question, all questions will be asked, and case study, like this case study was given to you, and 1 2 3 4 like this, all 5 marks question will be there, and function will be there to do this task. So using def we will write all these things and then we will call in the main program. So remove, and then we are writing here print stud list
Yes, now it will be removed, so you can run and you can see. Here I am running. Now you have seen Illa has been removed. Yes, next. Yes, next question. Past I'm using for loop. or directly? How we check anything? If If, Ram in stud if and underscore whatever list, is being then given, print present. that you have to search in stud list. तुम लोग का तो अभी समर वेकेशन भी नहीं हुआ, उसके बाद भी तुम लोग भूलने लगे हो. इफ इट इज प्रेजेंट देन यू विल प्रिंट इट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट. So here Ram is present in the list, and if it is not present then you will print here in else it is not present in the list. Is not present. Yes, now run and see, execute it. Actually this will be asked in case study. So this was a question of your pre-board exam. From case study only I have collected it. Yes, now next one. Now index 5, 0, 1, 2. Actually here you can see that only 3 names are there, and in index 5 you have to add. So let us add some more names so that I can show you this. So first I am adding some more names using a list. You can add, or directly in that also using append you can add. So a list I am taking, and then in this only, in student list, I am just adding here some names like suppose A, B, C, D and E. Yes, so fifth one will be 1, 2, 3, 4, 5 B. So in B something will be Kumar will be added. Now here suppose give some name only. Amit, B से कोई भी नाम डाल दो. बिरबल, C से सिंडा, शीला, सिंडा. ठीक है, ऐसे नेम्स है. अब ये अपेंड हो गया. अब हमको क्या करना है, फिफ्थ इंडेक्स में जो है उसमें हमको कुमार ऐड करना है. तो कैसे करोगे? मैम अपेंड करने से तो एक लिस्ट ऐड हो जाएगी, तो इसमें लास्ट में एक्सटेंड ऐड, करने से होगा. लास्ट में ऐड. एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड. और एक काम कर सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल में मैंने स्टड लिस्ट का जो फिफ्थ इंडेक्स है उसको मैंने ले लिया है. तो फिफ्थ इंडेक्स में जो भी तुम्हारा था वो आ गया. अब उसके बाद जो हमारा न्यू नेम रहेगा, न्यू में हमने ऐड करने के लिए हम प्लस साइन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं n प्लस कुमार को ऐड करना है मेरे को. तो मैं इसमें कुमार के कैपिटल जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा वैसे हम लोग कर देंगे. और इस न्यू को वापस मैं स्टड लिस्ट के उसी पोजीशन पे डाल दूंगी. तो स्टड लिस्ट के उसी इंडेक्स पोजीशन पे मैं उस न्यू नेम को डाल दूंगी और फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे. प्रिंट स्टड लिस्ट, student list. Yes, now when you will execute it, you can see here
what mistake I have done here? N I have already used somewhere. To store the value, N I haven't used anywhere. So I मैम will वो अपेंड नहीं होगा, एक्सटेंड होगा लगता है। अपेंड कर देने से तो लास्ट में सिर्फ 4 अपेंड होने से एलिमेंट तो ही हो लास्ट रहा में है। चला जाएगा, हमको लास्ट में नहीं डालना है। इसमें लास्ट मैम ये तो 2D लिस्ट हो गया, हाँ 2 डायमेंशनल लिस्ट हुआ तो नेस्टेड लिस्ट। अच्छा करेक्ट यस। एक लिस्ट को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपेंड कर दिया है। हाँ ठीक बोले। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ना एक नया लिस्ट ले ले रही हूँ अभी के लिए। स्टूडेंट करके शुरू में ही मेरे को फुल डाल दे, यहीं पे मेरे को पूरा नाम डाल देना था। ठीक है, यहीं पे डाल देते ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत ही नहीं है। इन नाम को मैं यहाँ से कॉपी करके मैं ऊपर डाल दे रही हूँ, यहाँ पे डाल दे रही हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो नाम था 0 1 2 3 4 5, जो 5th नाम था उसमें कुमार को उन्होंने 5th इंडेक्स में कुमार को ऐड कर दिया। ये एक्चुअली सॉर्टेड हो गया था, ऊपर ही हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कर लिया था बबल सॉर्टिंग यूज करके, तो ये सॉर्ट हो गया था। तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि ये असेंडिंग ए से लिख के ये सॉर्ट हो गया है, और जो 5th इंडेक्स में नाम है उसमें कुमार ऐड हो गया। आगे समझ में? ठीक है, वेरी गुड। कम से कम वर्षा ने एक गलती तो पकड़ा कि वो जो ऐड हो रहा था उसमें लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट हो जा रहा था। You should participate in this, otherwise what will happen? अभी तो सिलेबस बढ़ती जाएगा और वाइवा के समय, एक्सटर्नल जब आएंगे सीबीएसई वाइवा के समय, बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा। There are many students who are not understanding the concept, the logic, so they will face a lot of problem during your exams, during your viva. Viva means your logic should be clear to you. Yes, so this was your first question. Now second question was using a dictionary. I wanted to show you list today and how to swap inside a list, like rotating in a list. This question was asked. Now this question I am showing you how you will rotate in a list. Yes, tell me the answer, how you will rotate in a list. Now it is a user defined function, so you have to use function here. Tell the answer fast. First, for a function, what you will write? Def you will write, and then the function name is, suppose rotate, I am giving you here the function name rotate, and the list which you are passing, so list 1. So this is your function. Now in this list, how to rotate in a list, you are having a list like 1 2 3 4 5, and you want to rotate in a list, suppose 1 2 3 4 5 6 7 8. Now how to rotate in a list? Only the first value I will store in a temp. खाली ये फर्स्ट वाले वैल्यू को एक टेम्प वेरिएबल ले लो और उसमें डाल दो टेम्प इक्वल्स टू जो भी लिस्ट का नाम है। अगर लिस्ट का नाम लिस्ट 1 है तो यहाँ पे टेम्प में क्या आ जाएगा, लिस्ट 1 का फर्स्ट मतलब 0 इंडेक्स, तो लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स।
ठीक है, ये टेम्प में डाल दो बस, और उसके बाद 1 से लेके लेन ऑफ लास्ट तक एक एक प्रीवियस वाले में डाल दो और लास्ट वाले वैल्यू में टेम्प को डाल दो। रोटेट हो गया। रोटेट का मतलब क्या था कि एक एक सब प्रीवियस वाले में आ जाएगा वैल्यूज, और जो फर्स्ट वाला वैल्यू, इट वाज गिवन इन द एग्जांपल आल्सो, इट वाज गिवन how to rotate it, and the first one will be at the end. Like this they have asked you to rotate. So what you will do, you will simply use a for loop, and you will simply from here, that is the index position 1 to len of your list, you will simply put it in the previous one. Over. So only this much you have to do. So here I am taking a temp variable and I am storing the value of list 1. The first value I am storing, then I am using a for loop for x in range. Now from where I want to start, from 1 to len of list 1. That is the last one. Yes, over. Now we will simply shift it. Now how to shift it? That is, in x minus 1 you will give the value of x. So list 1 only. Everywhere I will use list 1. In that list only you have to do it. You cannot use a second list. So in list 1 I want to put in the previous one, that is x minus 1 position, I have to put list 1 x value. So over. Now you will come out, and at the end what you have to do, at the last one. Now what is the last index? You can write there minus 1 also. You can write there len of list 1 minus 1. Anything you can write. So list 1 at the end, last one, I want to put the value of 10. And then after coming out, I want to print it. So here also you can print it or return, any method you can use. So I am simply printing the value of list 1. Now in the main program, everybody will write the main program. Whenever this question will be asked, write a user defined function. You all will write the main program also. After writing the user defined function, you will write the main program. Now in main program, what you have to write? A list you have to take and you have to call list 1, in which you will give the values. So list 1 I am calling, and I am giving the values of L. So L I am assigning at the beginning 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, now when you will execute it, list 1 is being called, and in which you are passing L. What is the mistake in this? It is a list. मैम रोटेट को कॉल करना था। सॉरी, यस, रोटेट को कॉल करना है। मेरा तो आँख का पावर ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं देती। थैंक यू वर्षा। यस, सो rotate is the name of the function. So we have to write here rotate, and then we have to pass the value. So here you can see rotate, it has rotated, that is from second index. It was given in the question that first index, here you can see element at the first index moves to, oh हमने उल्टा rotate कर दिया। इसमें दिया था फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड में, सेकंड इंडेक्स को थर्ड में, और बोर्ड एग्जाम वाला उल्टा था, सेकंड को फर्स्ट में। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन वाज कि फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में, और लास्ट को फर्स्ट में उल्टा रोटेट करना है। तो हम इसको उल्टा रोटेट करके भी कर लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर लिखना है। तो उल्टा रोटेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसको हम टेम्प में कर देते हैं, -1 को हम टेम्प में कर देते हैं, और हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा हमको चलाना है लूप। तो उल्टा चलाने के लिए हमको लास्ट वाले को छोड़ के सेकेंड लास्ट मतलब -2 से लेके
माइनस लेन ऑफ लिस्ट तक, फर्स्ट तक चलेगा, ठीक है, -1 तक चलेगा, एंड इट विल बी स्टेप वैल्यू विल बी -1। उल्टा लूप चला रहे हैं। फर्स्ट वाले को मैंने मीन्स एकदम लास्ट वाले को छोड़ के सेकेंड लास्ट से लेके फर्स्ट एलिमेंट। नाउ फर्स्ट एलिमेंट डायरेक्टली ऑल्सो यू कुड हैव, ये मैंने क्या लिखा है, रेंज, हाँ ठीक ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको x में x माइनस x प्लस 1 में x का वैल्यू डाल देना है। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन जस्ट उल्टा करना था। अगर हमारा 1 and 2 3 4 है, एंटर क्यों कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, this is 1, this I am removing. Now the question was that 5 पहले आ जाएगा और फिर हमारा 1 2 3 4 ये होना था। तो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन हमारा -1 है और -2 -3 देन -4 एंड -5। तो ये लेन ऑफ लिस्ट 5 था, तो यहाँ पे माइनस ऑफ लेन ऑफ लिस्ट है, लेकिन उससे एक पहले नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा, उससे एक पहले यहाँ तक रुक जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको शिफ्ट कराने के लिए हमने -2 से शुरू किया और यहाँ पे माइनस ऑफ लेन ऑफ जो भी है उससे -1 कर दिया और स्टेप वैल्यू भी हमने माइनस रख दिया। लेट अस रन एग्जीक्यूट इट एंड सी वेदर इट इज फंक्शनिंग और नॉट। और लास्ट में हमको करना क्या है, जो फर्स्ट जो खाली हुआ है वहां पे टेम्प को डाल दिया। ठीक है, देखते हैं इसको रन करा के कि ये आउटपुट सही आया, हाँ सही आ गया। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना था, फर्स्ट को सेकेंड में, सेकेंड इंडेक्स को, अब इसमें जो वैल्यूज डाल रहे हो वही वैल्यूज आएंगे। सपोज यहाँ पे मैंने अगर 41 डाला है, इसमें 12, इसमें 39 93, इसमें 54 51 and 26. Suppose these are my numbers. Now when you will rotate it, 26 will come in front and all will be shifted one back, so you can see yes, it is correct. So this program was to rotate. Now you have seen I haven't used a list to. Now if you are finding a lot of problem during your exam, then you can use list to, because many students suppose in that list only you are not able, same list you are not able to do it. So this is your answer. Now using list 2, many were doing the same question, so I will also show you how to do it. Now you wanted to use a second list, list 2, and this will contain from list temp, means the last one will be first. So the first list, first temp will be coming here, and then so let us do append and do it. So I am first giving temp and then I am appending it in list 2 dot, but one value you can append directly. Is there any method from list 1? I want to give all the values except the last value. Slicing I can use, but in append, if I write here slicing, for loop I can use for appending. Alright, then I will use for loop only. For now, except the last element, all others I want to append it after temp. So for
x in, now here only slicing I am using. From list 1 I am collecting all the values till the, I don't want to collect the last value. So, and then I am using here append method and I am adding. This, the method which I am recalling now, I am just showing it to you. If you are remembering any other method, that you can write. So here I have used this method, and then over, so you will print, you will call this and you will print. So directly I am printing it here only, print. Now list 2 is having the value, so better is you give it to list 1 and then you print it. So first I am giving list 1 equals to list 2 and then I am printing here list 1. Now calling the main program is same. So this is our second method. Any other method which you want to discuss? Rotate, what happened? List 2 dot append list 1 का x. एक एक करके एलिमेंट लिस्ट 2 को मैंने डिक्लेयर, लिस्ट 2 में मैंने टेम्प डाल दिया था. ऑल राइट, अपेंड एक एम्प्टी लिस्ट में क्रिएट कर ले रही हूँ एंड देन आई एम डूइंग इट. सो लिस्ट 2 को एक एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं और उसके बाद डॉट अपेंड करके हम वैल्यूज को डाल के देखते हैं. लिस्ट 2 डॉट अपेंड में ये तो फंक्शन है, फंक्शन लिस्ट 1 का एक एक एलिमेंट. अच्छा, ये तो एक एक एलिमेंट डायरेक्टली उठा रहा है, तो इसमें इंडेक्स तो नहीं होगा ना, ये डायरेक्टली एक्स के पास एक एक एलिमेंट आ जा रहा है. Yes, now it is correct. Yes, now you can see the last element 26 is being printed first and then 41 to 51 is being printed. So this is the second method. Actually this is the best method which as per our syllabus, list 1 only I am using and doing it. But if you are not remembering this method, then I have used here list 2 method. Okay, so we will write this method only. I will share with you this program only, and this program at the end of the class I will share it. So this will be your program. Any other doubt in the question paper? Now here wherever they have asked you about the list, same in that list only you have to do it. You cannot use a second list for doing, like this swapping of this list first half with the second half. This question you tell me how you will do it. फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ के साथ स्वैप कराना है. कैसे करोगे बोलो जल्दी से. नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन, सो डेफ swap half name of my function, it will be given to you in the question and the list is given to you in the question. Now how you will swap first half with second half, you can use directly one for loop from 0 to half of len of L, and one more variable I am using here, j equals to, now it is starting from len of, first I am taking the length, so length is len of L and half of the length, half of this will be /2, so j I am starting from half, so it will be length /2, j will be starting, and then I am using a for
x in range. Now this will start from 0 and till length divided by 2. So this is your for loop. Now what you have to do, this you will swap with j. So x and j will be swapped off the list. So x comma L of j will be swapped. How to swap it? Just you will write the opposite. पहले j लिखोगे and then you will write here L of x. तो ये हो गया swapping. बस अब इसके बाद हमको क्या करना है, j को +1 करना है. j इक्वल्स टू j +1. बस हो गया. बाहर आके प्रिंट कर दो. फॉर का काम कंप्लीट हो गया, स्वैप हो चुका है. प्रिंट किसको करना है, एल को प्रिंट कर दो. बस. नाउ यू कॉल द फंक्शन. Now how to call the function? Simply you will call swap half. This is the name of the function, and then you will pass the list. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Now when you will run, you will see पहले 5 6 7 8 आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 आ गया. तो ये फर्स्ट हाफ विद सेकेंड हाफ स्वैप हो गया. ठीक है. अब इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली अगर तुम इसको नहीं लिख के यहाँ पे लेन ऑफ एल लिखोगे तो भी करेक्ट है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे लेन ऑफ एल डाल देंगे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सेम थिंग हियर ऑल्सो, len of L. So this is also correct. More simplification can you do in this? So this much, at least this much you have to write. So when you will run, you will see, yes, it is showing this. Now if user is entering the value, if the value is given in the question paper, suppose this is 11, 12, 13, 14, and that is 5, 6, 7, 8. When you will swap it, 5, 6, 7, 8 will come. That is the second half will come here. So second half with first half you have swapped. Now what I have done, I have used the same list only. I haven't used a different list here. उसी लिस्ट में स्वैप कराना है. ठीक है. एक्सचेंज करना है उसी लिस्ट. But if you are not confident, suppose you want to use a second list, like many students were telling they want to use a second list to do this program. That also you can do it in a second list. You will start first from second list. के लिए क्या करना है कि हाफ से लेके पहले स्टार्ट करके उसमें डाल देना है. उसके बाद फर्स्ट से लेके, तो यहाँ पे एक L2 लेना पड़ेगा और L2 में पहले हम सेकेंड हाफ को डालेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट हाफ को डालेंगे. सो आई एम यूजिंग अ लिस्ट L2 equals to this, and what I will do, I will start from half till the end and I will append in that only. So I am using here L2 dot append and I will append it. L2 dot append. I will use here what you have to append the values. L2 में append करना है, not in X. Append में L1 या L के X वैल्यू को append हमने कर दिया. इसके बाद जो सेकेंड हाफ रहेगा, इसमें हम जस्ट उल्टा करेंगे. 0 से लेके यहाँ पे हमने 0 से लेके यहाँ तक, और इसमें भी हम अपेंड ही करेंगे. इसमें जे की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, यहाँ पे जे की ज़रूरत नहीं है, तो दिस आई विल रिमूव इट. So L2, some students wanted to use L2, so yes, but best method is the upper method. Yes, so like this also we can do it. अगर उस समय नहीं समझ में आ रहा है तो फिर
Initializing L2 comma, the last one will be minus or len of L. Last one will be len of L. Now same thing it has done, that is the second half it has swapped with the first half. So this is the second method, but we will use this method only. Where exchange is written, they haven't given you in the question that you can use a second list. So we will use this method only. Clear? Any other doubt you are having? So this question paper, the main problem was coming with this method only. The other questions you have done it correctly. There was no problem in the other question. So go through the other questions. If you have any doubt in the other question, but you will use in that list only, you have to do it. So in next class we will practice more question where in that list only you have to change the position of any element. Like if they have given that swap first with last, second with second last, third with third last, and so on. Write the question. Next class you will give me the answer. That is, swap the first with last, second with second last in a list. Swap first element with last element, second element with second last, and so on. Second last element and so on in a list. Anybody can give the answer of this just now within seconds? User defined function. Okay, next class you give me the answer of this.